हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व द केमिकल चेंजेस। Changes means the formation of new things. There are two types of changes, physical and chemical change. In physical change, there is no new substance formed there. Only physical state will be changed. Just like that, when we boil water, water will evaporate and changes into steam. It means water from liquid state to changes into gaseous state. But the chemical composition of water and steam remains same. The formula of water is H2O, the formula of steam is also H2O. So this is the example of physical change. One more example, when ice melts and convert into water. Ice present in solid state and water present in liquid state. But the chemical formula, chemical composition of both the substances are same there. So such type of changes are known as physical changes. On the other side, chemical change forms new substances. केमिकल चेंज के अंदर कुछ नए पदार्थ बनते हैं. जब दो रिएक्टेंट या दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है. सो दैट चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म देयर, दैट इज नोन एज केमिकल चेंज. सो इन दिस एक्टिविटी वी विल डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज एंड व्हाट आर द जनरल एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. For that, first we will take a clear solution of copper sulfate, which help us to understand the concept of chemical change. This is the clear solution of copper sulfate, which looks blue. Okay, when we introduce some pieces of iron nails or some iron nails inside this copper sulfate solution, originally the color of iron nails all pink, that is stainless steel like silver color. When we introduce these iron nails inside this beaker, after some time we will observe that the color of iron nails will be started to turn into reddish brown like this one. It means there is a displacement reaction between copper sulfate and iron. Iron is more reactive, it displaces copper from copper sulfate, so the color of copper sulfate started to fade up. तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होना स्टार्ट होता है. ओके, तो इस तरीके से जो पहली एक्टिविटी है जिसमें हमने आयरन की रिएक्शन करवाई है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, वो एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है. दूसरा, अगर हम लोग केमिकल चेंज को समझना चाहते हैं तो हमारे पास में एक और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की आपस में रिएक्शन करवाते हैं. जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस बनाते हैं तो दोनों के जो सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं. ठीक, ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा हेजीनेस है लेकिन वो सिर्फ वाटर की क्वालिटी की वजह से है. तो दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं वो कलरलेस होते हैं. जब हम लोग दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं, यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट सॉलिड. सो बाय मिक्सिंग द टू लिक्विड्स, द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनसाइड द लिक्विड, दैट इज नोन एज precipitation reaction. And the precipitation reactions, especially this case sodium sulfate and barium chloride, also is example of displacement reaction, because in this reaction, in this change, there is a formation of new substance also. So this is also the example of chemical change. And the new substance which is white precipitate of barium sulfate here. So this is the example of chemical change. One more example we have. In that example, we will interact with metal and acid reaction. जब हम लोग किसी मेटल की, जिंक की या किसी और मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाते हैं, जस्ट लाइक डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, then that is example of
chemical change also. Okay. So how can we perform that activity? Just look at here. To perform this activity, we will introduce a small piece of zinc metal inside a test tube and then start to add slowly dilute sulfuric acid. This is dilute sulfuric acid. As soon as we add sulfuric acid inside this test tube, you can observe there is a formation of small bubbles of a gas. Look at here. This evaluated gas is hydrogen gas. So in this reaction, zinc metal reacts with dilute sulfuric acid and forms zinc sulfate and hydrogen gas. So there is a formation of new substances. So this is also the example of chemical change. Okay, and how can we ensure that this upcoming gas is hydrogen, or this the forming gas is hydrogen? When we bring a lighted candle at the mouth of this test tube, this test tube will burn, this gas will burn with pop sound. So this is another example of chemical change. So dear friends, in this activity we have learned that what is the meaning of change, types of changes, and how can we demonstrate, how can we observe the chemical changes. I hope you understand this concept completely. Thank you so much.